Hello everyone, my name is Shubham Dubey and I welcome you all on CreativeEdge YouTube channel. And today, as you must have known about from our notification, that we are going to discuss previous year questions of UCEED. But before I start my session, just let me confirm if I am audible to all the participants and if you are able to see my screen as well. Just give me a moment and we are going to start our session soon. So I can see that everyone is able to hear my voice and they can see my screen as well. So, but one more thing I would like to tell you for your information is that please do not forget to subscribe our channel. And one more thing is that कि अगर आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड यू विल बी गेटिंग द मटेरियल ऑफ दिस लेक्चर आफ्टर द क्लास. ठीक है, और इसके पहले भी जो हमारे प्रीवियस सेशन हुए, सो इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू टेक द डाउनलोड दोज नोट्स, तो वहां उनको भी आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. सो टुडे माय डियर पीपल, वी आर गोइंग टू डिस्कस यूसी 2018 पेपर. The reason, the reason I've taken this paper is that this was one of the easiest paper in the history of UC paper. तो इसीलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि हम पहली बार इस चीज को, इस सेशन को इस साल हम कर रहे हैं फॉर UC 2023 पीपल. तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस पेपर. 2018 वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर एंड सेकंड वाज 2015. ये दो पेपर आप देखेंगे कि काफी इजी रहे हैं, ये कंपैरेटिवली काफी बाकी पेपर से करने में आसान रहे हैं. और अगर मैं बात करूं सबसे टफ पेपर की, तो आई फाउंड दैट 2016 वाज अ ट्रिकी वन. बहुत टाइम कंज्यूमिंग पेपर ज्यादा था. सो सबसे पहले हम 2018 के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, सो लेट अस मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन है और अब यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ सकते हैं. हालांकि ये 2018 के इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, अभी कुछ कुछ चीजें चेंजेस हुए हैं, बट NAT वाला क्वेश्चन सेक्शन है यहाँ पर. NAT मींस न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप. दैट मींस यू विल नॉट बी गेटिंग द ऑप्शंस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. what you will be getting is that you will be getting the input and you have to feed input from using your keyboard or digital keyboard right now. So as soon as show you this question, I hope first of all you should read the instruction. और मैं तब तक देख लेता हूँ कि कोई चैट में कुछ अगर किसी को डाउट है तो you can ask me anything from me related to UCEED. So this is the very first question on your screen, which reads as how many different types of characters appear in the figure given below. तो कितने आपको कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, that is what you have to count in this question. Now for solving such type of question, the examiner actually wants to test your observation skill, and for that he has made this question. Now how to do this question is that I know this is one of the easiest questions, and how you can do is that कि यहाँ पर आप जो you can use your fingers to count the numbers and report the answer, right? So I'm waiting for your responses as well. If you know the answer, you can type in the chat box. Parallelly, I am also counting it. So let us begin to count the very first character. So we have, this is the very first character is first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Now you can see that I have this privilege of marking circles. You won't have, so that's why you need to be more careful while counting your characters, right? You don't have to count repeated characters. So as of now, in the first row you can see that none of the letters were repeated. That is why we counted each once. So 1 2 3 4 5 6 and 7. After that, now this is, let us come to the second row. I can see that this is not repeated, so I can count it. This is also not repeated, I believe. Yes, this can be counted. Then this can be counted as well. Let us see if this is repeated. I guess this is also not repeated, so we can count this. We can count this one as well, this one as well, and this one as well. So as of now, you can see that I am able to count both the rows, right? So this, how many figures as of now we have counted? It is 14. Now let us move to the third row. Now let us check if this is repeated somewhere. So I guess it may be. Let us see कि क्या हमको ये वाला फिगर कहीं दिख रहा है क्या. So in the first I'm checking.
I didn't get any. In the second row as well, I did not get any. So yes, it can be counted. This can also be counted, and this can also be counted. Now this one we can see in the first row as well. So this should not be counted. This one, let me check. I believe this should be counted. This one should not be because it is also in the first row. Then this one. So I can count this one as well, I believe. Let me check कि कोई repeat ना हुआ हो बच्चों. So yes, in the third row I could count these many. Then in the fourth row I have again this one. This was in the first row. I should not be counting. This one, this was again in the first row. Shouldn't be counted. This was in the first row. Shouldn't be counted. First row. Then first row. Then first row. And again, I guess ये आपका. Let me check which row it is in or whether it should be counted. So yes, it was also in the first row. So in the third row, I couldn't count any. In the third row, in fact, not third row, fifth row, I can see that this should not be counted. ये आपका सेकेंड रो में अवेलेबल है, ये भी सेकेंड रो में है, ये भी सेकेंड रो में है. दिस इज ऑल्सो इन द सेकेंड रो. This is also in the second row. This can be counted. This is the unique one, my dear people. This is in the first row. Then sixth row, I can see this is repeated, repeated. This can be seen in the third row. Repeated, repeated. This can be counted. Do not confuse with this one and this one. They two are different characters. This is repeated. Then I can say this is repeated, repeated. Then I have this one as also repeated. Then repeated, 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 and repeated. So let us see how many characters can we count as of now. So this was 7. This was 7. Then this was 3 plus 2, 5. And these 2. So I have 14, 19, and then 21. So 21 are the characters that we found them to be unique. I hope काफी लोग सभी लोगों को ये clear हुआ होगा. Now let us move to the next one. Next question. Now this is the question that you are seeing on your screen. This question is of क्या पूछा गया इसमें बच्चों? Given below is a series of numbers. Which number will replace the question mark? तो यहाँ पर आपके पास सीरीज है और यहाँ पर आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क के जगह पर आने वाला है. दिस इज समथिंग यू शुड बी फाइंडिंग. अब यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स गिव डिफरेंट लॉजिक टू दिस, बट मेक श्योर दैट वट एवर लॉजिक यू गिव that should be followed until the last number, that is 163. So यहाँ पर some of the students find that कि 2 का difference है, then we have a difference of 4, then 2 का difference, so again it must be the difference of 4. So by this logic they say कि यहाँ पर जो भी 4 वाला नंबर है that should come. But you should also realize कि क्या यही pattern आगे भी follow हो रहा है. So this is something you take care of. So यहाँ पर different लॉजिक्स आते हैं by the different students, but the clear cut logic is that कि आप अगर देखें all these numbers, you can see that they all are prime numbers. They all are nothing but prime numbers. ठीक है? So that is why in the place of question mark you will be fitting the prime number which is between 109 and 127. That is 113. This is the prime number that they are getting, right? So I hope सबको ये clear हुआ होगा. Now let us move to the next question. Now again the question is of counting how many lines are there in the image given below. So we have to count the number of lines. Now how you can proceed with this type of question? So the approach is that what you can do, my dear people, is that you count from, consider that there must be some row here and you need to count those point. Row wise चलिएगा आप लोग और यहाँ पर आपको count करने की जरूरत है. How actually you can begin your counting? This should be your first line. This should be your second, third, fourth, fifth,
6th, 7th, 8th, 9th and 10th. I hope यहाँ तक सभी क्लियर होगा. So I have moved downwards and then I'm going to move rightwards, right? अब rightward जाएंगे तो I'm going to count this one as my this one. I'm going to count this one. I am going to count this one. Now some of you must be counting this one, so make sure that this has already been counted, my dear people. So this should not be counted. Then this one, then this one, this, this one, this one, and this is the next one. Now you must be thinking, should I be counting this one? Again, the same logic. You should not be counting this one क्योंकि इसको आपने यहीं पर ही काउंट कर लिया. So this should not be counted. अब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने इसको काउंट कर लिया है. यू हैव काउंटेड दिस वन एज वेल. इसको भी काउंट कर लिया है, इसको भी कर लिया है, इसको भी कर लिया है. अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब कुछ भी नहीं बचा है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अंदर के अगर आप जब जाएंगे सो यू विल बी गेटिंग दिस एज वन ऑफ द लाइन्स. ठीक है, तो ये लाइन आपकी काउंट नहीं हुई थी, ये बाकी थे आई बिलीव. और थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे तो अब आपको राइट में जाने की भी जरूरत पड़ेगी. तो ये वाला काउंट हो चुका है. दिस हैज बीन काउंटेड, 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 बट दिस इज येट टू बी काउंटेड. समझ पा रहे हो सभी लोग? सो आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड द अप्रोच यू कैन गो बाय. ठीक है, सो मैं यानी कि यहाँ पर एक क्लॉकवाइज रोटेशन किया है काउंट करते समय, और वहां पर जो जो भी लाइंस थी उसको मैं आसानी से काउंट कर पाया हूँ. राइट, सो लेट अस सी हाउ मेनी लाइंस वी हैव. वी हैड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 and this is the 22nd. So 22 lines is something you are able to count. Now let us move to the third question. Now the question reads, how many configurations of block appear only once in the given figure below? So we have to count the number of blocks, those blocks which are appearing only once. So when I say only once, it means that, for example, if I consider this set of this block, so you can see that the same block can be found here as well. That means this should not be counted. This should not be counted. So I can see that we can easily identify the repeated ones. We can easily identify the repeated ones, and if I wish to find out those blocks which are only ones, so what I can do is that कि मैं total में से repeated को subtract कर दूंगा. I guess ये idea काफी simple है, right? So what we can do from here, this is something we can count as of now. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम repeat वाले को count कर रहे हैं. तो यानी कि यहाँ पर you can see this is repeated, this is also repeated. So 2 you found, then you found this one and this one. Then now I know that you won't have that privilege to circle as of now I am doing. So आप अपनी fingers का यूज कर सकते हैं काउंट करते समय इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो आपने इस जैसे इस पे आपने फिंगर रखा, इस पे फिंगर रखा, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ठीक है, और देख लीजिए कि इस टाइप के ब्लॉक कहीं है क्या, तो आप पाएंगे कि यू आर नॉट गेटिंग दिस टाइप ऑफ ब्लॉक्स एनीवेयर. सो 2 you have counted. Then this is 3, this is 4. Then if I move ahead, this is, could this be 5? So let me check if this could be 5 or not. That means gray and black, right? तो ऐसा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है. That is why I am not going to count this as of now. This is going to be 5, this is going to be the 6th one. ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं. फिलहाल मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं पेन अपने सर्कल का यूज कर सकता हूँ. सो आई कैन डू एज ऑफ नाउ, बट एग्जाम में भी हाउ यू कैन डू, आई हैव टोल्ड यू दैट. ठीक है, तो आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो दिस शुड नॉट बी काउंटेड, दिस शुड नॉट बी काउंटेड, एंड देन what I can, let me see कि कोई, हाँ, so यहाँ पर can we count this one? So yes, we can count as of now this one. Now let us move ahead. So 3 orange, 1 gray, and I cannot find anything of this type. Then 3 purple, 1 blue, none of this type, then none of this type. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने हमारे पास जो हैं सेम है. So then we have
3 blue, 1 purple, that cannot be seen. 3 blue, 1 purple, then 3 yellow and 1 purple. This set of block cannot be seen. So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यही सारे आपके रिपीटेड थे. ठीक है, नाउ लेट अस काउंट. इन्हें जो बचे हुए हैं वो सारे कैसे हैं, नॉट रिपीटेड हैं. सो आपके टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5. सो 5 एंड 5, 1 2 3 4 5 4 are 20. So 20 आपके टोटल ब्लॉक्स हैं, out of which how many you need to subtract, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8 subtract कर दीजिए. That means these 12, that means 12 are the blocks जो सिर्फ एक बार आए हैं, which are only once, right? So let me also check your answer if anyone. I'm waiting for your responses as well. ठीक है, so this is how we can move ahead. I hope सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा. ठीक है, now let us move to the next question, my dear people. Now this is the one of the most common question that you will see in any UCEED examination, where you have to count the number of fonts in this image. So number of font आपको count करने. Now one rule that I would like to tell here is that कि जो बहुत सारे बच्चों को misconception होता है, they have this misconception that whatever font is used for M is the same font used for A as well, for N as well, for G as well, or and for O as well. So the answer is yes. यहाँ पर जो फॉन्ट M के लिए यूज हुआ है वही उसके बाकी सारे लेटर्स को लिखने के लिए यूज हुआ है. दैट मीन्स यू विल नॉट बी चेकिंग M, then A, then G, N, then G, then O. No, you should not be checking in this way, but you will be saying mango is going to be considered as one unit. यानी कि ये जो भी स्पेल लिखी हुई है, this is of the single font. When you move to papaya, so you are going to have a different font or the same font as that of mango, right? So let us begin to count. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि how now we need to compare the font. So how we can do? Let us mark this as 1. Now compare mango with papaya. So you can pick any one of the common letters here. So you can see that A here and A here is quite different. That is why, my dear people, I am saying that this is going to be the different font, right? So this is the first font, this is the second font. Now let us compare apple with mango as well as papaya. ठीक है, तो यहाँ पर again I am going to figure out the common letter, that is P. P is common with papaya. So papaya का जो P है और जो apple का P है वो अलग है. Now let us compare apple and mango. तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि unfortunately we are not finding any of the letter to be common. A P P L E M A N G O. अब A भले ही कॉमन है लेकिन ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, but still we need to compare. So how we can compare? So let us compare A with M, because A आपका इस तरह से दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, और M अगर आप देखें सो A की जो थिकनेस है, it is uniform everywhere, while the thickness of M is slightly increasing, decreasing, increasing. In this way your M is there, it is varying, right? So that is why apple is of the different form. Now let us come to banana. Now banana needs to be compared with rest of the font, that is mango, papaya and apple. So यहाँ पर भी हम we will be picking up the common letters. So you can see that this A is different from mango, papaya, और आप एप्पल को भी देखते हैं तो एप्पल में भी आप देखेंगे कि इस तरीके की ये जो चीजें दिखाई दे रही है, this is not in apple. So yes, banana is a different font. I hope everyone is able to realize that. Let me check the chat box as well, all the online people, right? Then I have pineapple. So pineapple हम देखेंगे कि कोई सा लेटर कॉमन है क्या. So let us compare pineapple. So यहाँ पर pineapple को अगर मैं P देखता हूँ और apple का P देखूँ तो both are the same. So I do not need to count this one as of now. Let us move to orange. Orange का A देख लेते हैं और यहाँ पर हम जो है mango का A देखते हैं तो again both are the same.
so I need not count this. Then grapes का आप A देखिए, papaya का A देखिए, both are the same, we need not count this. Then pear, now pear का A देखिए और बाकी हर जगह पर A देखिए, mango का A of this papaya. Then now apple में आप E देख कंपेयर कर सकते हैं with pear. So both the E's are different. Some of you may think कि E बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, but if you realize that the circle of this E, this one, and this part is quite different, so that is why pear is a different font. So we should count this. Then guava. So let us check A of A again. So A से A को ही कंपेयर करते हैं, तो A यहाँ पर आप different है, this is different. Then if I look at apple, तो apple भी आपके guava से same है या different. So you can see that this guava का जो U है, this is somewhat curved. It is like this. While इस font में कुछ भी curve नहीं है, that is why it is different from this apple as well. Banana से भी different है, right? तो और पेयर से और कंपेयर कर लेते हैं, तो पेयर से यहाँ पर यू कैन कंपेयर ए ऑफ बोथ. सो ए आप लोगों को बहुत क्लोज से देखोगे तो आपको रियलाइज आएगा कि बोथ ए आर डिफरेंट. व्हाई आई एम सेइंग सो, यू कैन कंपेयर दिस पार्ट ऑफ ए with this part of A in the pear and guava respectively. So yes, guava is of the different font, my dear people. Then tomato. So look at this word. So tomato में अगर हम A को कंपेयर करें, so A आपका बिल्कुल पपाया के A के जैसा है. So you need not count this. Then pomegranate. So let us see कि यहाँ पर ये किसी लेटर के जैसा है या नहीं. ठीक है. So let us pick A here as well. यहाँ पर भी A को कंपेयर करते हैं. So pomegranate is same as pineapple, I guess. You can see that both are the same. So I need not count this. So how many font did we able to find? 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6. So 6 type of font you could find. So this is how, my dear online people, you must be checking that how many fonts were there. However, as I told you, 2018 was one of the easiest paper you will see. तो यहाँ पर आपको words कम है. To be honest, sometimes the number of words are more. And you will see in many of the paper that's in 2015, 16, 17, 19, 20, the number of words when it comes to comparing the fonts are larger. ठीक है, आपके जो fonts की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है. So you may or may not expect this much easy question in an exam, but as I told you कि ये 18 का पेपर काफ़ी easy था. रही बात इस particular question की, तो this question sometimes takes time. So if you are very much confident of solving such a question, only you should be attempting that. Otherwise what you can do is that you can simply skip this question if you are taking too much of time, right? अगर आप बहुत ज़्यादा confidence नहीं है, but since as of now you are preparing for the exam, so you must practice this as much as you can. और फिर at the time of examination, if you are confident enough, solve it. Otherwise skip it, right? Now let us move to the next question. चलिए, now have a look at this question. Now question number 6 is something we need to do. What has been told in this question? What is the maximum number of cuboids of length 2, breadth 2, breadth is 1 by mistake, and height 1, that can be packed into a larger cuboid of 3 by 3 by 11. That means there must be a larger cuboid of this length और उसके अंदर छोटे छोटे cuboids को fit करना है in this way. So the question is asking how many such cuboids we can fill in the large cuboid. So what, this is very easy to do. Obviously यानी आपको simply number of cuboids निकालने हैं. The number of cuboids, my dear people, can be found by volume of large cuboid divided by volume of a small cuboid. So this is this much easy this question is. तो अब आपके volume of large cuboid की बात करें तो how much it is going to be? 3 into 3 into 11, that is length into breadth into height is the volume of cuboid, divided by 2 into 1 into 1, that is volume of a smaller cuboid.
So when you solve this, you are going to get 3 into 3 is 9, into 11 is 99, upon 2 into 1 is 2, into 1 is 2. So this is 99 upon 2, and ultimately you are going to get 49.5. Now what does 49.5 indicate? Especially what does 0.5 indicates? It means that you will be able to pack 49 cubes, 49 cuboids, and you will be left with some space where you can put a cuboid of 0.5 वॉल्यूम. 0.5 वॉल्यूम मतलब दिस इज योर वन क्यूब, तो आप आधा क्यूबॉइड जो है फिल कर सकते हो, बट यू डू नॉट विश टू फिल द हाफ ऑफ द क्यूबॉइड. यू विश आइदर यू fill it completely or not at all. So that is why 0.5 should be ignored. That means you will be able to fit 49 cuboids and some space will be left, right? तो इसका यहाँ पर 49 cuboids is something you can fill. I hope सबको ये समझ में आएगा. तो कई बार UCEED इतना easy question ही पूछ लेता है. Now question 7 is very interesting. Many a time students are not able to understand what exactly it wants to say. It is lengthier as well when it comes to reading, but सिर्फ visualization की जरूरत है for solving this type of this question. It can become very easy if you look at the information clearly. ठीक है, तो क्या बोला गया? So there is this Professor Pettiem, in an attempt to create the world's most delicious dish, managed to merge a cylindrical idli. Now you can see that this time your idli is cylindrical, unlike your regular idli that you eat, right? So cylindrical idli है, diameter is 17 and height is 6. So you can have one cylinder whose diameter is greater as compared to its height. तो आपकी इडली बच्चों कुछ इस तरह से दिख सकती है. दिस इज हाउ योर इडली कैन लुक लाइक. ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी इडली दिख सकती है बच्चों. सो योर डायमीटर इज 17, दिस डायमीटर इज 17 and this height is 6. Now what has been told, my dear people, let us move ahead. With a torus shaped medu vada, inner hole diameter 2 cm. So your medu vada is just like you must have seen medu vada किस तरह से होता है, एक torus shape का होता है. ठीक है, so आप और उसमें जो inner hole है वो 2 cm का है. That means आपका जो मेदू वड़ा है वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा from the top. ठीक है, from the top आपका मेदू वड़ा कुछ इस तरह से दिख रहा होगा. This is your मेदू वड़ा. ठीक है, अब इसकी भी डायमीटर आपको यहाँ पर डायमीटर दी हुई है 6 इंच. दैट यू कैन सी दैट द डायमीटर ऑफ मेदू वड़ा इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द इडली. ठीक है, एंड ट्यूब डायमीटर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर. अब किस ये 7 सेंटीमीटर कैसे है? नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर मेदू वड़ा, तो जो मेदू वड़ा की जो हाइट है कैसे, ठीक है, आपका मेदू वड़ा की जो हाइट है वो आपको 7 दे रखी है, सच दैट द मेदू वड़ा इज पैरेलल टू द बेस ऑफ इडली and the centroids of two solids coincide. That means क्या करा है हमारे प्रोफेसर ने? The professor has merged what has been told. He is trying to merge both idli as well as medu vada such that कि यहाँ पर जो centroids है of two solids coincide. अब centroid का मतलब क्या होता है? Basically the central axis. The question is talking about the central axis. तो जो भी आपका मेदू वड़ा का central axis है, let me try to draw this. तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए बताता हूँ कि आपकी जो सेंट्रल एक्सिस है ऑफ योर इडली एंड सेंट्रल एक्सिस ऑफ मेदू वड़ा इज गोइंग टू कोइंसाइड. इट्स दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन जस्ट टू एंश्योर दैट कि आप जब दोनों को मर्ज करें तो यानी कि यहाँ पर आप मेदू वड़ा को एकदम सेंटर में रखकर ही मर्ज करें, राइट? दिस इज गोइंग टू बी इडली ऑफ सिलेंड्रिकल शेप और आप अपने मेदू वड़ा को मर्ज करेंगे, राइट? सो दैट यूनिफॉर्मली यू विल बी एबल टू मर्ज. ठीक है, now you have to find out the how many surface the resulting solid is going to contain. This is what the question is being asked. Now my dear people, you must realize that कि यहाँ पर ये आपकी इडली है और मेदू वड़ा को जब आप मर्ज करने जाएंगे तो वो किस तरह से दिखेगा. सो मेदू वड़ा को जब आप मर्ज करेंगे तो फ्रॉम द टॉप आपको कुछ इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा. दिस इज हाउ योर मेदू वड़ा इज गोइंग टू लुक लाइक, राइट? मेदू वड़ा ऊपर से इस तरह से ही दिखेगा. यू हैव मर्ज्ड इट. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों दिखेगा? द रीजन इज हाइट ऑफ इडली इज स्मॉलर एंड हाइट ऑफ मेदू वड़ा इज ग्रेटर. तो ऑब्वियस सी बात है, द मेदू वड़ा विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली ओवरलैप द इडली. सम पार्ट ऑफ मेदू वड़ा विल बी प्रोट्रूडिंग आउटसाइड.
आई होप एवरीवन मस्ट बी क्लियर विद द आइडिया। तो ऊपर से भी प्रोट्रूड करेगा, ठीक है, और आप पुश करते जाएंगे तो प्रोट्रूड करते करते थोड़ा सा नीचे भी आपका जो है मेदू वड़ा वो प्रोट्रूड करेगा। आई होप ये आइडिया सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर dish is going to look like. Now what we wish to find out, we need to find out the number of surfaces. Before that, let me check the comment section as well, right? So now we need to find out the number of surfaces. Now how many surfaces can we have, my dear people? Let us begin to count one by one. This is going to be the very first surface. ये जो cylindrical part है, the surrounding part है, this is going to be the first surface. Now if I look from the top, how many surfaces I'm going to have? Now you can see that this is going to be my second surface. I hope आप सब लोग imagine कर पा रहे होंगे कि आपका जो इडली है, the diameter of idli is greater and the diameter of medu vada is smaller. So obviously, again, the medu vada will not be able to completely overlap your idli diametrically, right? So some space must be here, right? And that space must be circular. That is why that is going to be one surface. Then this surface, the central one, this is going to be another surface. This is the another surface and this is another surface. So how many surfaces have you seen on the top? So top पर आपके पास एक ये surface है. Let me begin to count. Let me show you which is. So this is going to be one surface, right? जो circular बन रहेगी. The middle one is the second one, ठीक है. उसके बाद आपके पास एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है. समझ पा रहे हैं सब लोग, राइट? सो दिस इज हाउ मेनी सरफेस. इनफैक्ट आई हैव काउंटेड वन ऑफ द सरफेस ट्वाइस. कौन से सरफेस को मैंने 2 बार काउंट किया है? अगर मैं बात करता हूँ दिस प्रोट्रूडिंग वन, इसकी अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रोट्रूडिंग सरफेस, सो ये एक सरफेस जो है ये सर्कुलर है. So that should be counted only once. So on the top you have 3 surfaces. On the top you have 3 surfaces. Why I'm calling them 3? This is the first surface. ठीक है, जो gap है, the protruding one. This is going to be the third surface and the middle one is going to be the third surface. So 3 ये हो गई. उसके बाद इसी तरह से from the bottom as well आपके पास 3 surface होंगे. This is going to be the first surface, the protruding one, circular आपका protruding part होगा, that is going to be the one surface. Then this is going to be the second surface, ठीक है, and the central region is going to be the third surface. So 3 plus 3, top and bottom 3 plus 3, and this one. So a total of 7 surfaces you are going to have, right? So I hope the question must be clear to all the participants out there. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों. Now in this question you have to count the number of triangles in the figure below. Now how can you proceed for such type of question? This is one of the most generic questions that you will see in UCEED examination. Number of triangles, number of squares. That means counting figure is something that is one of the favorite part of UCEED. Now how can you proceed with such type of question? The approach is that what I do follow is that simply what I do is that कि यहाँ पर I begin to start with the smallest triangle, then I increase the size of the triangle and I begin to count. That means let us say if I say this is going to be my first triangle, second triangle, third triangle, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11, 12. Again you will be using your fingers while counting in the actual examination. तो अभी हमारे पास कितने हैं बच्चों? 2, 4, 6 into 2, 12. So 12 triangles you can see which are made up of one piece. ठीक है, आपके जो 12 triangles हैं they are made up of one piece. Now if I talk about other type of triangles, so you can see that now this time I am going to count those triangles which are made up of 2 pieces. Now 2 pieces means you can see that this triangle is made up of 2 pieces. So that means I'm going to count this. So this is going to be the first one, the second one, the third one, fourth one, fifth one and sixth one. ये आपके 2 ट्राइंगल से मिलकर बने. ठीक है, so we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now
you should be careful here. You should be counting this triangle as well. Many a time students forget this. Why do they forget? क्योंकि वो क्या करते हैं, they since the structure is very symmetrical, so what they do, 1 2 and 3, or 3 का double 6, but what they miss is that this triangle, these two triangles, so that is why they should not be missing that. तो यानी कि यहाँ पर दो पीस से मिलने वाले आपके पास 8 triangles हैं. Now let us count those triangles made up of 3 pieces. So 1 2 3, this is going to be one triangle. I mean, I'm talking about this triangle, right? This is going to be the first one, then the second one. उसके बाद then this is the third one, and this is the fourth one. I hope सबको क्लियर होगा. ठीक है, 4 यहाँ पर बन गए, 4 नीचे बनेंगे. ठीक है, so made up of 1 piece you have 12, made up of 2 piece you have 8, made up of 3 piece let us see कि कितना है. ठीक है, तो एक बार फिर से काउंट करते हैं बच्चों. So I have this I have this as my first piece, then this is my second piece, then this is my third piece, and this is my fourth piece. ठीक है, fourth piece मतलब किस किस को बोल रहा हूँ. This is the first, this is going to be the second. ठीक है, ये दो हो गए. इसके बाद this is going to be the third, और उसके बाद this is going to be the fourth. सभी को समझ में आया होगा आई होप. सो यानी यहाँ पर आपके 3 पीस से बनने वाले 4 ट्राइंगल, तो 4 ऊपर है 4 नीचे भी होंगे, तो 8 यहाँ पर आपके ट्राइंगल्स बनेंगे. आई होप सबको क्लियर हुआ होगा. लेट मी ऑल्सो चेक कि इफ आई हैव नॉट मिस्ड एनी. सो यस, आई गेस आई हैव मिस्ड सम ट्राइंगल्स. दैट इज, एक ट्राइंगल मैंने इसको भूल गया हूँ मैं काउंट करना. एक ये, then this one, and then this one. ठीक है, तो मेड अप ऑफ 3 पीसेस, 4 और काउंट हो जाएंगे. सो एक्चुअल में ये 12 है बच्चों. दे आर नॉट 8, दे आर 12. देन मेड अप ऑफ 4 पीस, तो 4 पीस से बनने वाले कितने ट्राइंगल है. यू हैव 1 2 3 4, यानी कि अगर आप इन ट्राइंगल को देखें, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस वन कंप्लीट ट्राइंगल, राइट. सो 4 such triangle are going to be there. This is the first one, this is going to be the second one, then after that this is going to be the third one, and this is going to be the fourth one. 4 पीस से बनने वाले you have 4 triangles. I hope everyone is clear with the idea. I'm checking your responses as well. Online people, you can ask me if you have any doubt, and you can answer me in the comment section as well. तो 4 पीस से बनने वाले क्या हमारे पास 4 ही है. फिर से एक बार देखते हैं. तो we have yes 1 2 3 and 4. Now made up of 5 pieces, you will find that you have no such triangles. ठीक है, you can try, but you will not be finding any triangle made up of 5 pieces. So I am directly switching to the triangles made up of 6 pieces. तो अब कितने ट्राइंगल हो सकते हैं. So you can have 1 2 3 4 5 6. तो यानी कि सबसे पहला ट्राइंगल तो बच्चों आपका यही वाला हो जाएगा. कौन सा वाला, this one. This is going to the first one. तो एक लेफ्ट साइड पे, second one is on the right side. ठीक है, this is going to the second triangle, then this is going to the third triangle, and this must be the fourth triangle. I hope clear हुआ होगा, right? So यहाँ पर आपके पास made up of 6 piece, you have 4 triangles. तो कितने होंगे बच्चे, काउंट कर लेते हैं. 20 32 36 40. So 40 such triangles are there in this figure. I hope you must be able to count these many triangles. ठीक है. Now let us move to the next question. And this question, my dear online people, all the people who are watching me or who will be watching me after the recording, so this is going to be the last question for the day. We will be coming with such more videos because UCEED form has begun to be filled. So इस आपकी UC की प्रिपरेशन के लिए हम लगातार आते रहेंगे. So this is why this is going to be the next question and the last question for the day. अब इसको again here also we have to count the number of stacks that you can see in this figure. अब number of stacks को कैसे count कर सकते हैं. तो there are multiple approaches for solving this question. You can just directly begin to count, but what one of the method could be, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को भी विजुअलाइज करने में थोड़ा आसान रहेगा. इफ आई लुक एट द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टैक, तो वो कुछ आपको किस तरह से दिखेगा बच्चों. दैट इज गोइंग टू बी लुक लाइक दिस. दिस इज गोइंग टू बी ट्रायंगुलर,
ठीक है। नाउ अब ट्राइंगुलर आपके बेस है, अब कितने, एक आपके जो बॉटम मोस्ट जो बेस है, हाउ मेनी स्टैक्स आर देयर, यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, यानी कि दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट वन। देन उसके बाद आप इस तरीके के आपको ट्राइंगल दिखेंगे, ठीक है। देन लेट मी बिगिन टू, थोड़ा सा बैलेंस अच्छे से बनाता हूँ बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी माई ट्राइंगल। देन आप लोगों के पास एक इस तरीके का फिगर होगा, ठीक है। सो 3 लेयर्स आई एम गोइंग टू हैव, और इस तरह से आपको, so this is the base of your stack. Now up if I begin to count this, if I begin to count from here, that is this stack, that means on the base it is this one. I hope everyone is realizing that. तो ऐसे कितने हैं आपके पास? ऐसे दो है बच्चों, you have one base and you have two base. तो ऐसे आपके पास यहाँ पर आपके पास दो आपकी स्टैक्स हैं। देन जस्ट यहाँ पर आपके पास कितने स्टैक्स हैं? So here you have two, obviously here you must have three because this is one level up. तो यहाँ पर आपके पास 3 स्टैक्स हैं। अब लेफ्ट और राइट में जाते हैं। So यहाँ you have 1 2 3 4, here you have 1 2 3 4 5, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। Now you should not be forgetting this one and this one. So यहाँ पर आपके पास अब देखिए, here you are going to have 6 and here you are going to have 7. तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। अब लास्ट में यू हैव 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आपके पास बच्चों 6 है, 2 3 4, इनफैक्ट यहाँ पर बच्चों यू हैव 5 और यहाँ पर आपके पास 6 है, ठीक है। सो दिस वाज द करेक्शन आई मेड। सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6, this stack is going to be of 7 and this stack is going to be of 8, ठीक है। काउंट कर लीजिएगा, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ स्टैक्स। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफी आसान रहा होगा, ठीक है। यू मे हैव सम अदर अप्रोच एज वेल, सो यू कैन गो बाय दैट एज वेल, बट मेक श्योर दैट whatever approach you are using, that is going to be less time consuming. So this was all about today's session, my dear people. I hope you must have enjoyed this session, right? And I also expect that you must have pressed the bell icon, you must have pressed the subscribe button for this channel, so that जो भी आपकी important information है regarding any design entrance exam or any architecture entrance exam, आपको यहाँ पर आपको notification के जरिए आपको मिलता रहेगा। So I hope आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द लिंक फॉर द मटेरियल फॉर द कोर्सेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। टेक केयर एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।